Srikanth, who is the third co-founder at Bitmeanus, he is also there on the chat. So Hmm, he'll intimate us कि यार live हुए नहीं हुए. correct. आई थिंक इंट्रो वगैरह कैसा रहेगा, कुछ प्लान है या वी जस्ट स्टार्ट? I think we're live. So let's ऑलराइटी, get started. awesome, awesome, awesome. Cool. Yep. So, hello everyone. Uh, Hi guys. Hey everyone. Let's we so have get with us Shivam and Neil. Neil जिनका भी नाम होता है, I think उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, नील, नितिन, मुकेश, Neil. मेरा भी बड़ा ही है. Right. So both of them have been kind of running amazing YouTube channels and have done a lot to kind of spread the right information um, over the last sort of few months that has been happening. We wanted to sort of come together and kind of address few questions. कुछ questions address करना चाहते थे जो जनता के थे regulations के around जो भी न्यूज़ आ रही है डेली काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं क्रिप्टो के अराउंड रेगुलेशंस के अराउंड क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चंस विल स्टार्ट एड्रेसिंग एंड बाकी कोई क्वेश्चंस अगर होंगे तो चैट में से विल काइंड ऑफ टेक देम अप एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर so I'll get started with a burning question. So one of the questions that is out there is ki are foreign exchanges going to be banned in India? So I'll just kind of take feedback from Shivam first, and then move more to Nitin, and we'll kind of take it further from there. What do you think? Like, would foreign exchanges be restricted in India, or what would happen? And what happens if that happens? I personally think हो सकता है. I don't think it is out of the picture, given how difficult it is to regulate the funds flowing in and out, even though everything is available on the blockchain, but then it's available post the transaction, right? So that's one big thing, and we've seen something similar play out with other exchanges like US. We have separate versions of exchanges for US, right? The same thing might happen here as well. I'm not sure if we are going to get a lot of foreign players coming into India with a separate Indian version. Maybe I think if the environment is regulated and there's a big customer base, we'll definitely see that inflow. And I do feel that there are downsides to it personally. I think a lot of people on the channel also commented about the same. But at the same time, I also feel if that happens, Indian exchanges are going to be incentivized to be better, right? Because a lot of people, a lot of non Web3 projects, non blockchain based projects who are into fintech, they are going to think, yeah, now this is regulated, right? This is an industry we can go into. SEBI regulate कर रहा है, so if I have a stock exchange, why not also open up crypto, right? The way we've seen with Simple, Robinhood, all of these guys, we might see similar plays, in my opinion. Right. What do you think, Neil? Yeah, so yeah, same as Shivam. I think there will be a separate Indian version like we have FTX US and we have Binance US. So we might see similar thing happening to India, but I think Indian exchanges will get an incentive, obviously, from the government to boost the industry. I think Gaurav will know more about that later when they announce it. But for now, if they are going to, continue the crypto narrative and still ban the foreign exchanges, but yeah, that is fine. But if they attack taxes, then that will become a problem. So as far as they are banning foreign exchanges, they should allow Indian exchanges to integrate more and more cryptocurrencies. Then I think that will balance it out. Indian tech will catch up very soon because they will see an incentive in promoting new cryptocurrencies. So Right. yeah, there is a very good chance that they will go ahead with the ban. Right. So I'll just kind of touch from an exchange owner standpoint ki what are the challenges usually that the government sees in terms of foreign crypto entities. It is not with respect to what sort of product they are offering or other things. It is more of a challenge of law enforcement. So there are cases where people have been defrauded and money has gone outside to some of these exchanges, and law enforcement
में साइबर क्राइम ने इन्हें रीच आउट करने की कोशिश की है, एंड देयर हैज बीन नो आंसर फ्रॉम देम, एंड इट हैज हैपेंड ओवर इयर्स. मतलब इट्स नॉट कि वन ऑफ केस है. सम ऑफ दीज एक्सचेंजेस आर 4.5 years old, and there have been hardly any sort of replies in some of these sort of cases. And that has basically happened to the tune of hundreds of millions of dollars over time. And when a lot of these cases are pending, there are actually investors or actually people जो कि डिफ्रॉड होकर उनका पैसा किसी ने क्रिप्टो के फॉर्म में बाहर निकाल लिया, एंड उनको कोई जस्टिस नहीं मिला है, राइट. सो दैट इज वन थिंग दैट इज आउट देयर, जिसके कारण इस डायरेक्शन में चीजें दिख रही है. विल गेट टू सी मोर डिटेल्स ऑन द बिल, बट एज अ होल अगर कोई चीज इंडिया से बनती है, मतलब they'll of course get an option to kind of set up their base in India and do it. जैसे अभी टेस्ला को बोला जा रहा है कि यार आप इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग करो, we'll kind of give you whatever incentives you want, right? But importing is something that's not benefiting a lot to our economy, right? So similar to that, if that exchange kind of comes across an Indian and then tries doing it, they're more than welcome. So यही प्लेबुक इसमें भी हुई. तो प्ले स्टोर पे Chinese apps ban हो गए. So you saw a TikTok and a lot of those sort of apps kind of getting banned. Some of them reinvented themselves, right? So जैसे PUBG था तो उसका एक variant आ गया, and they kind of reinvented and kind of made a way out. The others sort of didn't do it. तो उसमें कुछ like exchanges करेंगे, कुछ exchanges पीछे हट जाएंगे, and there would be a lot of other fintechs from India. They'll kind of build crypto sort of interfaces, crypto exchanges. तो एक फोन पे या पेटीएम या some of these sort of would kind of build it, and they are really really good. मतलब how the people that are listening right now would be using PhonePe for their transactions, right? या पेटीएम. So ये सब लोग भी आएंगे, right? So you'll have a lot of options. It's not going to be one of that way. Second चीज ये भी है कि यार ये जो भी टेक बना है, right? Even for global exchanges, that has been built by Indians. So Indians on the tech side are always very competent. तो आपको वो सब ऑप्शंस या फिर चीजों की कमी नहीं मिलेगी, या फीचर्स का वैसा कोई अभाव नहीं रहेगा. Even for FTX, it has been built by an Indian called Nishad Singh. Binance में भी काफी critical sort of tech people are from India, and Coinbase, in fact, Coinbase का जो chief product officer है, he is an Indian. He's from IIT Kharagpur, and he is ex Flipkart and also. काफी सारे लोग Indians, काफी सारे exchanges का backbone has been created by Indians. You'll see a lot of them that happening in India. और Web3 वगैरह के प्रोजेक्ट्स जितने आपको मिल रहे हैं वो काफी एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब वो इंडिया से इतना मशरूम हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव. सो ओवरऑल आई डोंट सी कि उतना नेगेटिव वो डिसीजन होगा. These foreign exchanges would also have an option to come and set up base in India. It would take some time. It would have a lag sort of time जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो विड्रॉ कर ले सकते हो टू इंडियन एक्सचेंजेस एंड कैश आउट, या फिर इंडियन एक्सचेंजेस में रख के और आप उसे ट्रेड कर सकते हो. So that option would always be there. Yeah, I think right Yeah. before we move to the second एक और question, there's another plus. Traditionally, India में we've been a service-oriented country, right? But with this, I think यहाँ पे the funds that have been flowing in, they are going to definitely increase because India is a big market, right? So from a VC perspective, it's going to be very attractive कि यार कुछ ही player है, right? Right. And I can be a part of a oligopoly, if not a monopoly, right? Yeah. So we might see that part of kind of VC funding as well in terms of building products. अभी तक products इसीलिए weak थे because we Right. did not have a lot of inflow of funds. I think Right. that's a plus for sure. Right. But like when you kind of take across a sector, right, उसमें multiple companies काफी large बनते हैं, ठीक है. For example, logistics as a sector, you have a FedEx, you have a Blue Dart, you also have an e-cart which is run by Flipkart, you also have a delivery which again is $1 billion. You also have other end of the logistics, जहाँ पे Dunzo है या फिर Swiggy का वो है या Grofers है. ये सब logistics plays ही है. उसके ऊपर service क्या दे रहे, it can be grocery, it can be food, it can be anything else. Similarly, crypto में वही होगा. Crypto में there would be hundreds of sort of companies that would kind of become really really large, and India has that sort of potential. We don't need to look for outside sort of stuff to kind of rely on that. If we kind of create a thriving economy here, positive
यूजर्स के लिए ये है कि यार आपका अगर किसी वे से अगर फंड लॉस होता है या फिर क्रिप्टो कहीं जाता है, वो रेजोल्यूशन हो पाएगा आपका। अगर रेगुलेट होता है तो काफी सारी चीजें मॉनिटर होकर आपका वो रेजोल्यूशन हो सकता है, विच इज बेटर फॉर द न्यूअर इन्वेस्टर्स दैट आर कमिंग इन। कभी आपके मॉम डैड भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे क्रिप्टो में, इफ दे काइंड ऑफ गेट डिफ्रॉडेड, इट इज वेरी कॉमन कि यार क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स होते हैं, इसके भी हजारों फ्रॉड मशरूम होने लग जाएंगे। एंड फॉर दैट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिमेन्स क्रिटिकल, एंड ये इसके थ्रू ये हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू वो करना काफी डिफिकल्ट है, दे हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट, एंड precisely why they've kind of arrived at this. We'll move to Interesting. the second question. And Thing which is so the second question is ki private wallets, are they going to get banned along with the foreign exchanges? Thoughts? so this That is going to be tricky. Private wallet को बैन करना would be sort of tricky. Enforce करना बहुत difficult है उस चीज को. The way sort of some of the information that has come is it would be restricted. It would be restricted. कितना restriction है क्या है? मतलब it should not be of that form factor कि यार private wallets पे अगर use कर रहे हो तो तुम्हें penalty लग जाएगी or something of that sort. तो ये देखना होगा कि किस वे में आएगा, लेकिन प्राइवेट वॉलेट्स को रेस्ट्रिक्ट करना मुश्किल है, मतलब उसका वो रेस्ट्रिक्शन एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म फैक्टर में हो सकता है, आप सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो चीज़ों को, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स। एंड नॉर्मली रूल्स और लॉज शुड ओनली बी क्रिएटेड जो एनफोर्सेबल होते हैं। एनफोर्स नहीं हो सकता है तो वो लॉ का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वुड काइंड ऑफ कम अप फॉर डिबेट एज वेल, एंड इस पे कुछ चर्चा भी होगी इवन ऑन द मिनिस्ट्री लेवल, इवन एज द डायलॉग जो कि कुछ एक्सचेंजेस और क्रिप्टो एंटिटीज के साथ हो रहा है, तो विल ट्राई एंड काइंड ऑफ डिफेंड ऑन दैट एंड ट्राई एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्यों डिफिकल्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है एंड ऑल ऑफ दैट, and we'll try and kind of steer it a bit clear around that कि यार इसको enforce करना बहुत difficult है, and like it also kind of violates a bit of privacy end of the spectrum, so that would be kind of out there, but we'll have to see what kind of comes through. Interesting. Yeah, I think more or less on the thoughts are on the same frequency about this. काफी डिफिकल्ट चीज है, Right. yeah, but राइट फ्रॉम लाइक हार्ड वॉलेट से लेके हार्ड वाले वॉलेट्स को लाइक कैसे ही बैन करेंगे? मेटामास्क, करेक्ट। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स इट एज यू से, मतलब बैन कर लो बट एनफोर्सेबल नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, लाइक वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। Right. नील, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैन क्रिप्टो हेल्प मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने का, मतलब कैन क्रिप्टो हेल्प कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग? Right. So, crypto के around, if you kind of look at money laundering, ये पहले से भी होते आए. It has happened in different forms, shapes and all. Yeah. Right. कैश में कभी जाता था, कभी गोल्ड में जाता था. लोग मतलब उस लेवल तक चले जाते थे कि यार अपने दांत गोल्ड के कर लेते हैं, कुछ कुछ अपने बम टू अ सर्टेन डिग्री। जब चीजें ओपन है और नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस वगैरह थे, तो some of these things were possible. So people used to kind of try and talk with people around WhatsApp या फिर some of these platforms like local Bitcoin and all, जहाँ पे KYC process was not very stringent. And वहाँ से they were able to sort of create accounts or buy accounts of someone and kind of then start doing transactions. तो इसके थ्रू काफी केसेस में money kind of went out. It has started kind of reducing over time. The benefit with crypto is कि there is a trace with the transaction hash and everything, right? So it has been kind of in काफी cases में cyber crime के through we've kind of tried identifying and helping them recover the part of that money, but with regulations, some of these things like a technology can be used in both positive and negative ways. Crypto as a technology is transfer of money quickly, right? मतलब it can transfer money quickly from one end of the spectrum to other.
at like light speeds, right? So if that is possible, right, it can be used positively, it can be used negatively, right? So वो जो negative aspect है उसको restrict करने के लिए कुछ guidelines हो सकती है. Some of those guidelines have been prescribed, mentioned, talked on the government level as well as recommendations through exchanges. क्योंकि कोई exchange या फिर जो legitimately operate कर रहा है वो नहीं चाहता है कि उसका गलत use हो. एक्सचेंज एज अ प्लेटफॉर्म का गलत यूज होकर किसी को कोई हार्म पहुंचे या कोई इलीगल काम उससे कर पाए. तो exchanges have come together and kind of given a sort of अंडरस्टैंडिंग और काइंड ऑफ कि ये गाइडलाइंस के थ्रू वो कम हो सकता है एंड इफ दीज आर सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड तो क्रिप्टो के थ्रू पॉजिटिव वे में चीजें ट्रैक भी की जा सकती है. सो देयर आर सॉर्ट ऑफ ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स टूल्स जो कुछ लेवल तक फिगर आउट कर लेता है कि व्हाट लिंक इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड ऑल. So that is out there. So over a period of time, like crypto would help in kind of reducing some of these laundering activities that are happening as things get more and more digital. We'll see like there is a lot of forensics around crypto and blockchain that would happen. This through transaction traceability would kind of cover a wider spectrum of all the set of transactions that are happening in crypto. Correct. And ये इसके सारे बाद चीज में move on करते हैं. Yeah. Yeah, I was just about to ask, like, ये सारे Yes. इसमें CBDCs or like the fact that RBI is so much looking into CBDCs, uh, what's the outright advantage here of a CBDC? And do they Yes. like, does it really matter कि वो CBDC है या फिर आप UPI कर रहे हो? Is it the Hmm. same thing, right? अगर सिर्फ मनी ट्रांसफर ही है बात उधर उधर तो. Right. राइट 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 राइट. तो कोई भी चीज कभी समझना होगी तो यूजुअली ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन शूज, राइट. तो अगर अपन आरबीआई के शूज में खुद को डालते हैं, राइट, लेट्स ट्राई एंड थिंक फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव कि यार क्यों ऐसा कर रहा है, राइट. तो आरबीआई एज अ होल नीड्स टू रन द इकोनॉमी. They need to ensure the flow of money is changeable. अगर कभी money inject करना है इकोनॉमी या reduce करना है, that should be possible. एंड ओवरऑल कितना पैसा है सिस्टम पे, इस पे आरबीआई का ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है. नाउ अब होता क्या है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का, राइट. डीमोनेटाइजेशन में करना ये चाहते थे कि जो कैश सर्कुलेशन है, जो अनअकाउंटेड कैश सर्कुलेशन है, उसको they wanted to sort of remove from the system, right? And it kind of do transactions and all for a while. Genuine लोगों को परेशानी 15-20% सर्कुलेशन से निकल जाएगा because many are assuming कि बहुत सारा black money है, ये all of that. But people figured out ways and they kind of got money back into the system. Now, doing that when you have a digital currency is far more elegant and simpler than when you have a lot of sort of fiat supply which is non-digitized, right? तो जो यूपीआई वाला बात है, यूपीआई वाला बात इज स्लाइटली डिफरेंट कंसिडरिंग कि जब एक फेडरल रिजर्व बात करता है, फिर रिजर्व बैंक बात करता है, वो M0 मनी सप्लाई की बात करता है, विच इज द बेस लेयर ऑफ मनी सप्लाई. उसके ऊपर लेयर्स क्रिएट होते हैं. तो जब आपके पास वो M0 मनी सप्लाई होता है, उसके बेसिस पे सपोज यू डिपॉजिट 100 रुपीज इन बैंक, उस 100 रुपीज के बेसिस पे बैंक 1000 रुपीज का लोन देती है. सो दैट मनी सप्लाई इज इंक्रीज, दैट इज M1 मनी सप्लाई. उसके ऊपर Correct. तुम्हारा क्रेड आकर और लोन देगा, उसके ऊपर तुम्हारा मनी टैप और इजी टैप और व्हाटएवर इट इज, दे विल काइंड ऑफ गिव लोन्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होते जाते हैं मनी सप्लाई के, राइट. M0, M1, M2, that way, and like Yeah. that creates a lot of flow into the economy. Now, as if it is digitized and kind of linked back to the digital rupee, it is easier for
them to do demonetization or anything at the click of something. Because it is going to be a private sort of blockchain, they can decide कि यार आज 2 0 कम करने हैं, कल 2 0 बढ़ाने हैं, they'll kind of decide that. But it is helpful for them and to kind of control the flow of money in the economy, but that is not what a crypto stands for, right? Crypto का basic root ये है कि crypto is for people who can kind of in a decentralized democratic way decide what is it that they consider a form of money or an asset where they would want to park savings, where they would decide कि this is a store of value for them. और जब भी बिटकॉइन भी बना था ऐसा नहीं था कि किसी कुछ लोगों के पास ही मिल रहा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? वो एक्सेस डेमोक्रेटाइज था, कोई भी उसे कर सकता था. सेम विद इथेरियम एंड लाइक पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दैट. पब्लिक और प्राइवेट का डेफिनेशन काइंड ऑफ ट्राई एंड एक्सप्लेन अ बिट. तो पब्लिक गवर्नमेंट के हिसाब से ये होता है कि पब्लिक इज समथिंग दैट दे डू. सो पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी होता है, पब्लिक थिंक टैंक होता है. तो पब्लिक वर्ड गवर्नमेंट खुद के लिए कंसिडर करता है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो दैट इज पब्लिक. तो इसीलिए लॉट ऑफ पीपल हैड कंफ्यूजन्स कि यार लाइक हाउ कैन यू कॉल अदर थिंग्स दैट्स प्राइवेट एंड ऑल. तो गवर्नमेंट इज लाइक हम जो करते हो पब्लिक है, बाकी लोग जो करते हो प्राइवेट है. So that's how they sort of classify it. Private cryptocurrency, of course, that is not the definition कि यार Monero, Zcash, Dash वो सब नहीं है. अगर कोई बोल रहा है आपको तो वो गलत है. That is not going to be the case. Anything that the government or RBI doesn't do is considered usually not public. So that was the overall definition around private. But private crypto assets भी regulate होंगे, उनको ban नहीं किया जाएगा. Is what is kind of coming across from the cabinet note, and that's a very strong positive. So yeah, I think that should kind of give people clarity and understanding around public, private, and other things. Yeah, makes sense. So यहाँ पे लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ये वाला क्वेश्चन हो सके तो हिंदी में, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं. ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ डिफरेंट टोकन अलग अलग एक्सचेंज में अलग क्यों होते हैं? ठीक है, लाइक बाइनांस पे अगर आप देखोगे तो 60 रुपये में अगर मिल रहा है, कुछ मान लो BitBNS में 65 का है या 55 का है. तो ये हमने काफ़ी बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन एक बार आप लोग भी कर लो तो बेटर रहेगा. राइट, शिवम पहले एक्सप्लेन करो. किसी भी एक्सचेंज में जनरली जो प्राइस है, आई थिंक बिफोर वी गेट इनटू लिक्विडिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी प्राइसेस है ना, ये ऑक्शन के हिसाब से बिकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज एन ऑक्शन. मैं कितने में लेना चाहता हूँ, सामने वाला कितने में खरीदना चाहता है, राइट? तो देयर आर बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स. तो अगर लिक्विडिटी नहीं है या लिक्विडिटी कम है, विच मीन्स मान लो बेचने वाले लोग उतने नहीं हैं जितने खरीदने वाले हैं, दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो बंदा खरीदने में बोलेगा 70 में नहीं मिला, ठीक है, आई पे 75, आई पे 80, राइट? तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो अप रहता है एज कंपेयर टू द अदर वन. तो वो जो लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करने वाला कॉन्सेप्ट है इन एन एक्सचेंज, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यूजुअली लिक्विडिटी ऑफ अ कॉइन, सप्लाई एज वेल एज डिमांड ऑफ अ कॉइन एंड्स अप क्रिएटिंग थोड़ा सा वेरिएशन. तो जब हम कोई बाइनेंस जैसा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं जो यूजुअली ग्लोबल है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स सप्लाई जो है चीज़ों की वो ज़्यादा होगी, एंड इवन डिमांड भी कंपैरेटिवली उसी लेवल पे होगी, राइट? तो दैट क्रिएट्स अ सेपरेट प्राइस एक्शन फॉर बाइनेंस एज अपोज टू लेट्स से कोई इंडियन एक्सचेंज है जहाँ पे फॉरेन या रादर ग्लोबल ऑडियंस नहीं है, तो जनता का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली कम है. तो वहाँ स्पेसिफिक कॉइन के हिसाब से वो लिक्विडिटी अलग अलग होने की वजह से प्राइस अलग होता है. इज व्हाट आई नो. आई गेस बैकएंड पे आप बेटर बताओगे गौरव. राइट. तो लाइक प्राइसेस डिफरेंट होने के कुछ रीजंस है. वन इज कि इंडिया में डिमांड सॉर्ट ऑफ आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई अ बिट. इंडिया में 2 साल तक आरबीआई रेस्ट्रिक्शन जब था, तो लॉट ऑफ द क्रिप्टो मूव्ड आउटसाइड इंडिया, एंड एज सॉर्ट ऑफ थिंग्स गॉट बैक, things crypto market also started moving upward, like halving आया और उसके बाद crypto market started moving upwards. So in that short span of say 15-18 months, we got like 15 million new crypto users that were kind of coming in, right? सप्लाई करने वाले लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे, मतलब जिनके पास क्रिप्टो था या होल्डिंग था. सेकंड इज कि क्रिप्टो इंडिया में क्रिप्टो माइनिंग नहीं होती, मतलब
वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, वेरी वेरी लो। तो इसीलिए क्रिप्टो का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इंडिया में। यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू बीटीसी और समथिंग, जिसके कारण वो सप्लाई आने का और कोई वे भी नहीं है, राइट? दैट इज नंबर 2। थर्ड इज कि जिस भी कंट्री में कैपिटल कंट्रोल्स टाइट होते हैं, कैपिटल कंट्रोल्स टाइट होने का ये मतलब है कि आप इंडिया से रुपी बाहर भेजना मुश्किल है आपके लिए, ठीक है? या फिर आप यूएस डॉलर नहीं होल्ड कर सकते हो, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यूएस डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स, यू कैन काइंड ऑफ होल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसडीटी। तो जब भी ये होता है, तब ये यूजुअली होता है कि वो जो दूसरे फॉर्मेट में कुछ मिल सकता है, जैसे यूएसडीटी और समथिंग दैट इज अ प्रॉक्सी टू दैट यूएस डॉलर, दैट वुड ट्रेड एट प्रीमियम बिकॉज पीपल सी इट एज a comfortable way to kind of mirror that sort of asset buying, right? So that's why that kind of, so demand higher है और supply का limitation है, ये सब चीजें factors influence करता है। that is one. Now this is why Indian crypto prices typically are at a premium, ठीक है? वो एक explanation है। सेकंड इज क्या, एक्सचेंजेस में क्यों डिफरेंस होता है? तो जो काफी लोग ये कंपेयर करते हैं, गूगल की प्राइस कंपेयर करता है। गूगल की प्राइस आती है कॉइनबेस की, जो कि कन्वर्ट करता है यूएसडी आईएनआर के रेट को मल्टीप्लाई करके, व्हाटएवर इज द डॉलर वैल्यू ऑफ दैट इनटू दैट। नाउ इन फैक्ट प्राइसेस बिटवीन कॉइनबेस एंड बाइनेंस आल्सो डिफर, ठीक है? वो डिफरेंस इसलिए आता है कि यूएसडी एंड यूएसडीटी का प्राइस डिफरेंट होता है। कभी 1.01 होता है, कभी 0.99 हो जाता है, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट इधर उधर करते रहता है, राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज दे आर exchanges of comparable sizes, right? That's why वो difference एक range में maintain होता है, right? इस केस में even all of the Indian exchanges combined together are not even say 5% of what Binance size is, right? So they are not able to kind of match that in terms of what volume demand is out there. अगर वही उस स्केल पे आ जाएगा तो इट वुड बी काउंटर बैलेंस, और वो उतना डेल्टा आपको नहीं मिलेगा। दैट इज वन। तो इसलिए आप देखते हो कि जब भी यूएस कभी कोई न्यूज आती है, यूएसडीटी आईएनआर मूव कर जाता है काफी सब्सटेंशियली, 80 भी मूव करता है, 70 भी मूव करता है, ऑल ऑफ दैट, व्हिच इज अ वेरी वेरी क्रेजी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो वो चीज है। थर्ड इज कि प्राइसेस डिफरेंस होने का ये रीजन है कि यार कुछ एक्सचेंजेस में डिपॉजिट विड्रॉ डिसेबल्ड होगा, ठीक है? तो जब डिपॉजिट और विड्रॉ डिसेबल्ड है किसी एक्सचेंज में, प्राइसेस वहां पे कहीं भी जा सकती है। एंड दैट इज हैपेंड इन मल्टीपल एक्सचेंजेस जहां पे ये डिसेबल्ड होता है। वहां पे फिर कोई बेसिस नहीं है, कोई उसे आर्बिट्राज करके कंप्लीट नहीं कर सकता है कि यार उसके प्राइस रैशनलाइज कर दे, राइट? सो अगर आप वो बंद ही कर दोगे तो यू कैन ट्रेड इट एट एनी प्राइस पॉइंट, और वो काफी बार होता है। दैट इज वन रीजन ऑल्सो दैट काइंड ऑफ हैपेंस। सो these are few reasons. I think like if anything else that is out there, let me know. मैं भी सीखूंगा कुछ। Yeah, I guess मेरे लिए तो this I have noticed it before, Google वाले prices वाला point, and especially क्योंकि INR conversion हम देखते हैं उसमें, so that's definitely another perspective जो मेरी तरफ से missing था। राइट, Good. आई थिंक लाइक नए यूजर्स के लिए वो काफी ज्यादा वो मैटर करता है। Shocking लाइक होता यार है। Yeah. बीटीसी का Correct. प्राइस यहाँ पे 42 लाख है, यहाँ पे 45 लाख है, मेरे को तो मतलब वही है बहुत कि ही ज़्यादा फर्क है फ्रॉम अ न्यू ईयर पर्सपेक्टिव। 3 लाख का फर्क है, राइट? सो इट यूजुअली मेक्स, आई गेस अगर नील भी बताएगा तो इट मेक्स फॉर लाइक 50% ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम राइट। बिगिनर्स कि यार Yeah. ये प्राइस क्यों लगा रहा है। बट प्राइस क्यों लाइक डिफरेंट है? दे आल्सो शुड कंसीडर कि सेलिंग पे भी उनको 45 मिल रहा है, सेलिंग पे उनको 42 नहीं मिल रहा है, लाइक सेलिंग पे भी 45 ही मिलेगा। वो नहीं देखे ना लोग। Hence I think And I arbitrage. think like arbitrage is one aspect of the second is कि I'll also try and explain कि यार closed order book exchange और open order book exchange का difference समझ लीजिए, ठीक है? ओपन ऑर्डर बुक एक्सचेंज हमेशा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, आपको सारे ऑर्डर्स दिखते हैं, क्या क्या चीजें हैं आपको क्लियरली विजिबल होगा। क्लोज्ड ऑर्डर बुक एक्सचेंज में आपके सामने एक प्राइस रखी जाएगी बाय के लिए, आपके सामने एक सेल की प्राइस रखी जाएगी, ठीक है? यू कैन गेट स्टक इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, और काफी केसेस में ये किया जाता है कि यार क्लोज ऑर्डर बुक एक्सचेंज में यूएसडीटी आपको बाय करना है तो 80 रुपीज होगा, सेल करना है तो 78 रुपीज होगा। तो क्लोज ऑर्डर बुक एक्सचेंजेस का एग्जांपल है कि जो रिटेल सॉर्ट ऑफ एप्स बनते हैं जिसमें ऑर्डर बुक आपको नहीं दिखेगा, मेड बी कॉइन स्विच, मेड बी कॉइन डीसीएक्स, वैसे टाइप जो वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिटेल के लिए एक ऐप बना दिए, बट वहां पे आपको प्राइस में डेल्टा मिलेगा, मतलब वो प्राइस में काफी डिफरेंस होता है, और आप
आपको बोला जाएगा कि फीस नहीं है, लेकिन वो फीस किसी और फॉर्म फैक्टर में ली जा रही है जो कि आपसे काफी हाई फीस वहां पे लगेगी। तो ऑलवेज ट्राई एंड ट्रेड ऑन ओपन ऑर्डर बुक एक्सचेंजेस। थोड़ा इनिशियली कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है आपको कि यार ये ऑर्डर बुक क्या है, इतने सारे वैल्यूज क्या है, बट ओपन ऑर्डर बुक एक्सचेंज में आपको पता होगा कि यार इतने की डेप्थ है, यहाँ पे ऑर्डर्स काफी सारे लगे हैं, तो ये सपोर्ट हो सकता है, और बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो करेक्ट, आई थिंक बाय वॉल्स सेल वॉल्स बहुत क्लियरली पता लग जाते हैं, सो यू यूजुअली ट्रेडर्स एंड अप प्रेफरिंग आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए तो ओपन ऑर्डर या बुक्स। बट ऑर्डर बुक्स फेक करने का भी सीन होता है कभी कभी, ऐसा मैंने सुना है, स्पेशली बाइनेंस के राइट, चक्कर में। मतलब that's a possibility, but it's still not as bad as a closed order exchange. Closed order book exchange में मतलब think of it this way कि I'll not name sort of the app, but like वहां पे बाय एंड सेल में 2 से 2.5% का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल, राइट, 2-2.5% का, और आपने मनी लोड कर दिया और आप क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो यू आर लॉक्ड इनटू द सिस्टम कि यार तुमको सिस्टम में लॉक कर दिया गया है, तुमने पैसा लोड कर दिया, अब तुम्हें बाय कर लिया है, अब तुमको सेल करना है तो उसी प्राइस पे सेल करना है। कुछ ये सब एप्स में लिमिट ऑर्डर्स भी नहीं थे, मतलब इट वाज लाइक यू हैव टू हिट द मार्केट, देयर इज नो लिमिट ऑर्डर, यू हैव टू हिट द मार्केट, सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स आर not very customer friendly. They can cause a lot of problems and losses to users, and it's a very negative experience कि यार मैं 100 रुपए डाला, मैं 100 रुपए का कुछ खरीदा और मैं इंस्टेंटली 98 रुपीज देख रहा हूँ, and क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यार वो स्प्रेड से मुझे वो दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को सेल करना है तो 98 में देगा, so all that is out there. तो well, let's move to the next question. या सो या नील, हेलो। या ओके, सो क्रिप्टो बिल को लेके काफ़ी स्पेकुलेशंस है, एंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि फॉरेन वाले बैन हो जाए, तो क्या इंडियन एक्सचेंजेस पे यहाँ पे नए जो कॉइन्स है वो लिस्ट होने स्टार्ट होंगे, एंड स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो अनेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऑलमोस्ट ना के बराबर आई थिंक किसी भी इंडियन एक्सचेंज में स्टेकिंग के ऑप्शंस नहीं है, बट बीएनएस में थोड़े से हैं, बट Right, लाइक सो। right, right. So staking वगैरह का इस पे क्लैरिटी आएगी स्टेकिंग के अराउंड, मतलब some of these concepts are see, like when you're kind of trying to fight a battle, you'll try and figure out कि यार क्या चीजें सबसे critical है, right? You'll not fight for everything. You'll like यार these are the most critical things, और ये चीज तो होनी ही चाहिए इंडियन इकोसिस्टम में, अगर क्रिप्टो को ग्रो करना है, थ्राइव करना है, तो ये चीजें तो होनी चाहिए। अब सम ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक स्टेकिंग एंड ऑल would come later as sort of things kind of get more streamlined. अब ये सब चीजें एक्सप्लेन करके रेगुलेटर्स का इसका वो लेना becomes trickier now. Staking also kind of gets people get confused on the regulatory side as well as कि यार ये staking है, जो yield farm होता है उसमें भी they feel कि यार they're staking some tokens and they're getting, अब yield farms में they start saying कि यार ये 50,000% APY or what is this all that, and they feel it's sort of scamming, right? So it is that care, and if you kind of keep getting deeper and deeper into that, you will never get to a concrete regulation part of it, right? You have to figure out कि यार कौन से critical areas है कि यार trading should be allowed, investing should be allowed, right? So all those sort of things have been kind of discussed. ये सब चीजें भी बात की जाएगी कि स्टेकिंग हो गया, डेफाई वाला हो गया, एनएफटीज वाला हो गया, ऑल ऑफ दोज आर काइंड ऑफ पार्ट अराउंड दैट, बट इट्स लाइक यार ब्रॉड क्लैरिटी पहले चीजों पे ले लो, ठीक है, कीप द अदर थिंग्स एज अ सैंडबॉक्स और इन द वर्क्स, ठीक है, उसको बैन मत करो, मतलब बैन करके कोई फायदा नहीं, सैंडबॉक्स में रखो और उसके अराउंड फिर नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करो। थिंक ऑफ इट दिस वे कि यार ये बिल की बात भी पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, मतलब 2 साल से तो ऐसा था कि यार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, अब होगा, तब होगा, whatever it is, right? And even now we're kind of almost 1 week is done. The bill का वो नहीं है, the winter session would get over on December 21 या 22 कुछ, right? तो typically that is the case. So staking वगैरह ये सब चीजें भी cover होंगी, and I think that we'll kind of see most of around that. Tokens कैसे onboard होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए definitely framework की जरूरत है. Otherwise you'll kind of start seeing very random coins getting listed and kind of people getting access to it. तो उसके around definite clarity की जरूरत है. People should be able to kind of
like मतलब exchanges के around एक framework होना चाहिए, and exchanges at times have to succumb to pressure, right? If users are demanding and users start saying कि यार that exchange is listed, I'll go there and do that and whatever it is, right? तो ये एक problematic चीज होती है कि यार like if you're not offering access, but अगर guidelines है तो everyone has to follow it. So नए tokens कैसे list होंगे, क्या होंगे, उस पे भी guidelines आएगी. बट ये तो इंडियन जो हमारे पब्लिक है उनके साथ गलत ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले आईजीओस होते हैं, उसके बाद लिस्टिंग 1 लिस्टिंग 2 अलग अलग एक्सचेंजेस में आते हैं। जब तक इंडियन एक्सचेंजेस में आएंगे तब तक तो कॉइन हमारे लिए पोटेंशियल है वो हमारा 10x से 2x भी नहीं रहेगा, हार्डली Right. 2x रहेगा। नहीं तो why do you think IDO platforms पर restriction आएगा? मतलब Yeah. those things are also a part of the discussion कि यार IDOs या फिर investments किस form factor में होनी चाहिए, क्या उस पे चीजें होनी चाहिए, and would people sort of open access कैसा होना चाहिए users के लिए उसके अराउंड, तो वो सब भी होगा और ये लाइक कंट्री के अंदर वो चीजें थ्राइव करेगी. इट इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ ट्रिकी. जैसे सी यूएस as a whole has kind of barred people, like most exchanges bar US people, right? कि यार बिटमैक्स बोल देता है कि यूएस इन्वेस्टर नहीं चाहिए. यूनिसॉप वगैरह भी काफी केसेस में कर दिया है, वो सर्टन आईपीस को जियो ब्लॉक कर दिया है, न्यूयॉर्क वगैरह कुछ आईपीस को जियो ब्लॉक कर दिया है. एंड इट इज दैट कि lot of DeFi front ends also like DYDX and all of that have done that. It is that कि उस US के ecosystem में it has kind of created roadblocks, but overall most of these innovations have come from there. मतलब Uniswap US से ही है, Compound is from there, Curve is from there. A lot of these things have kind of gotten built from there. इंडिया में से भी काफी सारी चीजें बनेगी. You will kind of get a lot of that access. And international VCs would also want to sort of participate, international investors would want to sort of participate, and that thriving economy would sort of get created. We have the largest developer strength, मतलब ये चीज हमेशा से रहेगी, and crypto as a whole needs that sort of developer strength that should be out there to kind of create big projects. तो जैसा मैटिक है, वी एंटिसिपेट कि वैसे 50 मैटिक्स क्रिएट हो जाएंगे नेक्स्ट 3-4 साल में, राइट? इट इज यूजुअली इनिशियल चीज को टाइम लगता है, राइट? उसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो काफी एम्पलीफाई होती है. तो जैसे फर्स्ट यूनिकॉर्न इंडिया में बनने में इट टुक लाइक 10 years प्लस. इनमोबी वाज द फर्स्ट यूनिकॉर्न. फिर यूनिकॉर्न एक 2 साल में बनते थे. फिर लाइक 2-3 क्वार्टर में एक यूनिकॉर्न बनने लग गया. फिर अभी इट इज लाइक यार यू हैव अ यूनिकॉर्न एवरी वीक. देयर हैव बीन 41 यूनिकॉर्न्स क्रिएटेड in the last 47 weeks in India, right? तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. क्रिप्टो में भी वो होगा. इंडिया के इससे होगा तो इट इज गोइंग टू बी लॉट मोर सॉर्ट ऑफ क्लियरर फॉर VCs टू इन्वेस्ट एंड काइंड ऑफ पार्टिसिपेट इन सम ऑफ दीज थिंग्स. तो वो रहेगा. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड कि क्रिप्टो बिल जो है उसको पब्लिक कर पब्लिक देना कर चाहिए. देना, yeah. So I think this has been kind of mentioned by Subhash Chandra Garg, who made his bill public, जो कि बैन वाला बिल था. He had created that entire sort of bill and he made it public just like 2 years back, 2.5 years back, 2019 में. And public तो definitely होना चाहिए. It is broader consultation definitely helps. It needs to be time bound though, कि एक सर्टेन टाइम विंडो के अंदर होना चाहिए और पहले से लोगों को बता देना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में वो बिल के लिए कमेंट्स आने चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक स्लाइली पुट आउट कि लोगों को पता ही नहीं और कमेंट्स का टाइम खत्म होने आया. सो इट शुड बी आउट देयर. वो होगा. देयर इज काइंड ऑफ सम voices that are being kind of pushing around that. तो वो चीज के अराउंड काम चल रहा है, बट लाइक दैट वुड हेल्प. फॉर नाउ यू आर एनीवेज गेटिंग सम स्निपेट्स कि बिल के अंदर क्या है, कैसा है, एंड ऑल ऑफ दैट. And some of those snippets are sort of correct and more closer to what the actual bill will be. या आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी तो उनका सुभाष चंद्र गर्ग है, उनका खुद का भी स्टांस थोड़ा चेंज हो गया है फ्रॉम व्हेन ही हैड प्रिपेयर्ड द बिल एज वेल. बट आई डेफिनेटली अग्री विद दैट. I think with this we can definitely segue into the question of taking a blockchain as a career, because we know कि n number of projects जो हैं क्रिप्टो के दुनिया में, they have
Indian talent within the tech space. I also know even within the marketing space, there's a lot of Indian talent, right? Branding wali side se काफी strong रहे हैं. Right. And within India, with whatever is being planned, how do you think the gates towards blockchain as an official career, कि जहाँ पे parents बोले हाँ बेटा blockchain engineer बनो, right? I think that's blockchain developer वाला जो एक पूरा फंडा है. I've talked to a few. It's very hard to come by. You would already know this. Very hard to come by. काफ़ी अच्छे solidity developers specifically अगर बात की जाए इसमें from the backend side. What do you think kind of the timeline will be, and लोगों के हिसाब से भी like क्या what should they think कि हमें अगर इस लाइन में जाना भी है, तो is this a good line to be in now, given कि अभी इंडिया के भी रूल्स इस तरह से हो सकते हैं, right? So that एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है शायद उनके लिए. Right. तो एक चीज people should understand is कि blockchain development is radically different from normal web development. I'll tell you the reason why. Blockchain में अगर तुम कोई गलती करते हो, blockchain development is more closer to rocket science as compared to traditional web development. One of the reasons for that is कि अगर तुम कोई गलती करते हो, तुम्हारा सारा फंड जीरो हो जाएगा. Any sort of bug, any sort of loophole, the way if you kind of keep a bug when you're launching a rocket, the rocket is going to explode. Here as well, if you kind of have some bug in your smart contract or something that you have overlooked या कोई edge case आपने नहीं consider किया है, your contract is bound to get exploited. आज नहीं होगा कल होगा, and people are going to take money out of it. Some of them would wait कि यार ये contract में और पैसा आ जाए, and then they'll try and do that, right? Some of the most sophisticated minds around the world work specifically on this to kind of exploit some of the contracts and kind of make money out of it. So you're kind of grilling with the best of the best globally, right? So that is one which normally you don't get an opportunity to, right? जो भी तुम बनाते हो typically local होता है, it has kind of a certain वो and all. यहाँ पे तुम global day one से कर रहे हो. You're competing with global protocols, you're competing with different things. Like for example, Matic has to compete with a Solana and an Avax and a Luna and others, right? So they're kind of competing global from day one. Similarly, अगर आप कोई lending borrowing protocol बना रहे हो तो you'll compete with an Aave and a Compound and others that are kind of out there. So जो भी चीज़ बनाओगे काफ़ी high chance it can get copied really quickly. You have to kind of compete with the best of the best. At the same time, you also need to think from an angle ki how do you screw your own system. If you don't think from that angle, someone else is going to kind of do that for you. So you have to consider care what all loopholes might be there, what all exploits could be done, and then kind of build it. Vis-a-vis normal front end, like normal web development is care you have to move fast and break things, right? Like जैसे फेसबुक का मोटो था कि यार मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यार कुछ फटता भी है उसको सॉर्ट कर लेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? वहां पे कोई वैसा लाइफ थ्रेटनिंग या मनी मूविंग वाला पार्ट नहीं हो रहा है, राइट? दैट्स द सॉर्ट ऑफ डेल्टा. तो दैट इज दैट. एंड यहाँ पे you're dealing with people's money, right? It's like you're like, and some of the contracts can attract hundreds of millions of dollars in a span of hours, right? So you have to be very critical there. Blockchain engineer और blockchain में कुछ भी कर रहे हो is a very very coveted thing right now. You'll have to work hard for it, but there is no dearth of jobs per se. We ourselves are kind of hiring. काफी और companies would be kind of coming up as regulations get clearer. So there is definitely a massive opportunity. Focus on it, learn it better. Not just अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती है तो बाकी चीज़ें सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, कम्युनिटी ग्रोथ सीखिए, और भी कोई चीज़ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, एनालिटिक्स वाला आप काम कर सकते हो. You can help the project understand, do comparative analysis, make sort of what features are missing, understand from community feedback कि ये चीज़ improve कर सकते हैं, and all those sort of things जो कि total value logged और कुछ चीज़ें improve कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, you can kind of experiment and start on it. करेक्ट. एंड जस्ट आई थिंक इसका एक क्विक फॉलो अप, तो अगर किसी की कोई एग्जिस्टिंग स्किल्स है, राइट, हाउ डू दे, और रादर वेयर कैन दे स्टार्ट कि उसको यहाँ से ब्लॉकचेन की तरफ पोर्ट किया जाए. लेट्स से मेरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग.
अगर किसी को मार्केटिंग आती है या सोशल मीडिया चलाना आता है, uh, एज समबडी जो एक प्रीमियर एक्सचेंज चला रहा है इंडिया में, राइट, यू वुड look at people in a certain way कि यार Right. this is the talent I want, right, or Right. this is the Right. type of talent I want. राइट राइट सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यार तुमने कुछ प्रैक्टिकली किया है क्या, राइट? ऑप्शंस की कमी नहीं होती, आप अपने खुद के प्रोफाइल से भी चीजें कर सकते हो, राइट? इफ यू कैन प्रूव कि यार मैं अपने प्रोफाइल में ये चीज करके एंगेजमेंट इतना बढ़ा दिया, या फिर आई इंक्रीज माय फॉलोअर्स और आई डिड समथिंग, तो आपको प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए कोई कमी नहीं है। मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बिल्ड समथिंग, एक्सपेरिमेंट, ट्राई करते रहो डिफरेंट थिंग्स, आपको काफी चीजें ट्राई करके पता चलेगी, राइट? इट्स नॉट कि यार तुम हजार चीजें पढ़ते रहो, पढ़ना इज वन पार्ट ऑफ इट, बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ट्राई स्टफ एंड फिगर आउट कि यार हाँ ये चीज वर्क करती है, दिस इज हाउ पीपल गेट एंगेज, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हियर, दिस इज हाउ आई कैन comment on someone's post and kind of drive attention to what I'm trying to say, and all those sort of things, and you can learn that, matlab that is not critical, but that is a very valuable skill set, right? तो अगर कोई चीज के अराउंड ज्यादा चैटर नहीं है, and it's a new project, and if you can kind of help drive conversation or momentum around that project, that's a very valuable skill, and a lot of people would want to have you on board for that skill. Interesting. Cool. Neil? So yeah, what's the like venture capitalist interest in Indian blockchain ecosystem? कितना It investment काफी आ रहा है? massive है, मतलब it's pretty massive. It is it was it of course was around exchanges. Exchanges के around we've been approached by a lot of them. Others have kind of raised capital, and uh, the journeys have kind of gone through, and like अभी वो दूसरे Web3 projects वगैरह में ज़्यादा flow नहीं हुआ है. Indian VCs have been kind of sitting tight and have not invested much, but global capital is kind of flown in. So global capital already understands that crypto is not a regional play; it is going to be global from day one. So a lot of people are kind of keen, and the amount of money flow would just amplify really, really quickly. तो exchanges पे ही नहीं, मतलब Web3 projects Web3 पे projects, है। Web3 projects अभी वगैरह तो भी आ वैसे रहे हैं. exchanges This की is more साइड critical, right? क्या exchanges एक limited set के बाद तुम exchanges, देखो VCs काफी वैसे होते हैं कि यार जहाँ पे थोड़ा प्रूवन होता है उसमें डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसीलिए अब तुम देखते हो कि यार हार्डवेयर स्टार्टअप्स में ज्यादा लोग पैसे नहीं डालते इंडिया से, कि यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट उनको पता है कि यार कॉइनबेस चल गया, कॉइनबेस बहुत बड़ा हो गया, तो इंडिया का कॉइनबेस कोई बनेगा, इंडिया का क्रैकन कोई बनेगा, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, सो दे स्टार्ट पुटिंग मनी कि यार हाँ ठीक है, दीज आर माय बेट्स. अब उनको ये नहीं समझता है कि यार पॉलीगॉन कैसे चलता है, वो पैसा कैसे कमाएगा, और ट्रांजैक्शन फीस उसकी बहुत कम है, तो रेवेन्यू कैसे बनेगा, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. दे डोंट अंडरस्टैंड टोकनॉमिक्स एंड ऑल. So that would be a learning curve for them. A lot of them have been kind of spending hours daily on this, but because there would be global capital coming in, there would be a massive competition for a lot of projects, and that would help propel these projects like really, really fast. Interesting. Yeah, काफी सारे like bigger whales, I'll let's just call them whales, have been as you said, have been spending a lot of time. They've been also sending out a lot of messages to understand कि यार ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है. So that this is a question definitely which piques my interest as well. क्योंकि Web3 में अभी जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो Web2 को नेटिव Web2 का बिजनेस मॉडल Web3 में जो सेम उस बिजनेस मॉडल को उठा के Web3 का एक लेयर लगा के चलाने वाले मॉडल्स हैं. एज थिंग्स प्रोग्रेस स्टफ इज गोइंग टू बी नेटिव Web3. तो बिजनेस मॉडल ही कंप्लीटली नया, एज यू said about Matic, for example. I think that's definitely something that these guys have been spending a lot of time on, at least to a few that I have had a chance to have a conversation. So pretty interesting. I guess next would be moving on to the investor side and retail investor side. तो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि यार मेरे पास लेट्स से 50,000 है या 1 लाख है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको मैं पूरा क्रिप्टो में डाल लेता हूँ एंड मैं 20x कर लेता हूँ, स्टॉक्स में क्यों डालूँ? राइट. सो इज दिस द राइट वे इन योर ओपिनियन टू गो अबाउट इट? आई नो माई व्यू पॉइंट, मैंने बहुत बार पब्लिकली वॉइस किया है. Right.
तो मेरा ओपिनियन इसके अराउंड ये है कि यार जो आपको ज़्यादा बेटर समझता है उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है. आई hardly have invested into stocks. My first investment into Indian stocks happened because my friend launched a startup called Small Case, जो कि thematic investing कराता है. He's my batchmate from IT, and he told me कि यार you give me feedback on the product, and I was like ठीक है. So that's when I created a Zerodha account and started investing by Small Case. So that was my first stock investment. बाकी आई कुड नेवर रिलेट टू व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनीज वर ट्रेडिंग. तो मुझे चीजें नहीं समझती. एलएनटी सीमेंट या फिर बल्लारपुर चीनी मिल्स क्या कर Yeah, रही है मेरे को relatable. नहीं समझ. A lot of that sort of stuff is out there and I was like I don't understand this. बट मेरे को ये समझता था कि यार मेरे को टेस्ला वाला चीज समझता है, फिर एप्पल समझता है. सो आई एक्चुअली गॉट माय फ्रेंड हु वाज इन यूएस टू गिव मी अ Robinhood account, and I started investing into US stocks, and it did well. I kind of invested into Tesla. Tesla went out well. Invested into Zoom during pandemic. यार हाँ, it made sense क्योंकि I had a few friends from Hong Kong and China, and this is like Jan Febish when things started kind of lockdown started happening there. That's when I realized कि यार remote काफी वैसा relevant हो जाएगा, and did those things. So that's something that is more natural to me. वो मुझे समझता है क्या ये है. But crypto like stocks is still a very small fraction of my portfolio. I understand crypto a lot more. There are reasons for that कि यार I live and breathe crypto by running an exchange and doing a lot of these sort of things. But अगर आपको किसी चीज का अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो उसके आपके odds सक्सेस के बेटर होंगे, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मेक 20x ऑन स्टॉक्स. इट्स नॉट दैट कि स्टॉक्स में 20x नहीं हो सकता है, ठीक है. बिकॉज इट इज अ मोर मैच्योर इकोसिस्टम, वो कम स्टॉक्स में होगा या फिर जो भी होगा, राइट. But there are people who have made 20x or even 50x and 100x on stocks as well. Tesla itself has gone 100x in the last 10 years, right? वो Yeah, but टाइम the स्पैन हायर time होगा, span, ठीक है. yeah. Yeah, the time span would be higher and all those sort of things, right? You need to figure out what sort of investor you are, right? Second is कि जो चीजें तुमको ज्यादा समझती वो करिए, ठीक है. Crypto of course offers more opportunities, more sort of lesser market cap projects. जैसे कोई प्रोजेक्ट लिस्ट होता है, जैसे पेटीएम लिस्ट हुआ, राइट. पेटीएम लिस्ट हुआ 15 बिलियन मार्केट कैप पे. 15 बिलियन से जाएगा कहाँ वो, राइट. इट्स नॉट गोइंग टू गो टू लाइक 200 बिलियन and all in a span in say a couple of years, right. तो because 200 billion पे तो रिलायंस बैठा है, राइट. मतलब you can see sort of the difference that is out there. तो that's when you realize कि यार लेकिन अगर पेटीएम 150 मिलियन पे लिस्ट होता, it would have been a really solid company to invest, right. मतलब that sort of opportunities are more on crypto. So I would suggest कि यार if you are more that sort of an investor, crypto is the way to go. क्रिप्टो में भी यू कैन टेक अ सिग्निफिकेंट लॉस. क्रिप्टो में डाउनसाइड भी बहुत है, राइट. बट इट्स लाइक यार आपको अगर क्रिप्टो बेटर समझता है तो डू ट्राई इट आउट ऑन क्रिप्टो. Yeah, understandable. But आजकल का young investor is like head first and think later. Like पहले मारो फिर पूछो. तो like they are high यार risk, high reward. इट वर्क्स वेल इन अ बुल मार्केट, ठीक है. Yeah. जब बेयर मार्केट आएगा और कंसिस्टेंटली 2.5 साल रहेगा ना, फिर दैट बिहेवियर आल्सो चेंजेस अ लॉट, राइट. Yeah, यू लेकिन अभी हम इन्वेस्टर माइंडसेट देख रहे हैं. अभी मतलब रिसेंटली ही ये ऐप सारी पॉपुलर हुई हैं, स्टॉक्स एंड क्रिप्टोस. तो अभी तो बुल मार्केट चल रहा है दोनों में ही. तो उन्होंने कंसिडर कभी करा नहीं है कि बेयर मार्केट भी कुछ हो सकता है. Right, so people learn from the experiences, right? मतलब it is out there कि you will learn from your experience. Um, तुम अगर कंसिस्टेंटली अभी ऐसा हो रहा है कि यार तुम इन्वेस्ट करते हो तो हर चीज ऊपर चले जा रही है, ठीक है. कोई 20% जा रही है, कोई 50% जा रही है, कोई 500% जा रही है, ठीक है. सो यू फील दैट इज लॉस कि यार मैं 500 वाले में नहीं डाला, मैं 20 वाले में डाल दिया, ठीक है. दैट इज व्हाट्स काइंड ऑफ हैपनिंग. बट जब ये होगा कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो पेटीएम के आईपीओ टाइप 50% नीचे, 40% नीचे, जब ये कंसिस्टेंटली होने लग जाए, कोई 40% नीचे, कोई 20% नीचे, कोई 30% नीचे, दैट्स व्हेन यू विल बी लाइक यार व्हाट्स रॉन्ग विद मी, लाइक मतलब वो क्वेश्चनिंग होती है. जब भी मार्केट्स ऐसे टाइप जाते हैं, राइट, एक्सटेंडेड बुल मार्केट्स वुड आल्सो हैव एक्सटेंडेड बेयर मार्केट्स, ठीक है.
इट इज मतलब काफी उसके अराउंड हाइपोथेसिस वो है. थिंक ऑफ इट दिस वे कि जापान हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट बुल रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, Okay. 1965 से लेकर 1991 तक जापान में इंसेन बुल रन था. 35 लाइक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड जब 1991 में जो स्टॉक मार्केट की प्राइस थी जापान में, इट हैज नॉट बीन रीच्ड इन द लास्ट 30 years. 30 साल में उस स्टॉक मार्केट की प्राइस तक जापान का इंडेक्स गया भी नहीं है. ठीक है, whereas Indian index went from 1,000 points to about 60,000 points in that same time period, 60 times, right? So that's the sort of delta. They had a very very extended bull run, so that also kind of correlated with the extended bear run. But it's like that कि यार तुम experiences सीखोगे. I would suggest कि यार you should always have a thesis or a hypothesis when you're investing. ठीक है, क्योंकि when things go wrong, you have a reason to hold that token, right? अगर तुम बिना hypothesis के बस बटन दबा रहे हो, राइट, जब वो टोकन 50% या 70% डाउन जाएगा, यू विल नॉट हैव द कन्विक्शन टू होल्ड इट एंड यू विल सेल इट ऑफ and realize that loss. Yeah, makes sense. But what are the advices like bear market में क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग पहली बार देखेंगे तो उनको अभी यहाँ पे शेक ही रहेगा थोड़ा सा. Right. बैर का मार्केट में यार मतलब कुछ तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होता है कुछ डेफिनेटली यूएसडीटी में रखो, नंबर वन. ठीक है, बिकॉज यू माइट गेट इनसेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज. बहुत ही लो वैल्यूड टोकन्स कुछ कुछ जा सकते हैं. दे लेजिट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लाइक 95% डाउन आर अ रियली रियली गुड सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट. दैट इज वन. सो यूएसडीटी हमेशा रखो अपने पास. यूएसडीटी से इंटरेस्ट बनाते रहो सो दैट यू आल्सो आर मेकिंग सम इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट. तो अगर 2 साल का बेयर मार्केट चला और यूएसडीटी पे तुम 30% बना रहे थे तो यू ऑलरेडी मल्टीप्लाइड का कैपिटल, राइट. एंड बेयर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज जहां जहां मिल रहे हैं वहां बाय करते रहो. बाकी अगर कुछ टोकन्स लेके रखो तो उनको स्टेक कर दो, राइट. उनको स्टेक करके उनको इंटरेस्ट बेयरिंग मार्जिन लेंडिंग जो भी करो, उनका नंबर्स इंक्रीज करो, राइट. सो योर एवरेज बाइंग प्राइस गोज लो. That is critical because when again the tide would turn, when again a bull will come, um, you have a lot more of those tokens by then. Yeah, I think we've not heard Shivam's opinion on this. कि stocks में डाले हैं crypto. So I think I'm right there with you. I am a big fan of Warren Buffett, and the basic premise is कि जो समझ में आता है उसमें आपका allocation आप ज़्यादा रखो. For a lot of beginners, मेरा outright suggestion ऐसा ही होता है कि क्रिप्टो में 5-10% से स्टार्ट कर लो, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी है कि आदत ही नहीं है उस वॉलेटिलिटी की, राइट. पुराने लोग तो अपने आप समझ जाते हैं कि क्या कैसा कब क्या साइकिल चल रहा है, एंड व्हेन यू शुड और रादर किस टाइम पे कितना परसेंटेज स्टेबल कॉइन्स में मेंटेन करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज का कहाँ वी कैन सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, राइट. तो ब्लैंकेट एडवाइस फॉर बिगिनर्स इट हैज ऑलवेज बिन कि यार थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लो क्रिप्टो में. गेट यूज टू द वॉलेटिलिटी. एक बार देखो 50% डाउन जाता क्या होता है. स्टॉक्स में किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा, राइट. म्यूचुअल फंड्स भी अगर देखे, देर इज ELSS स्कीम्स विच इज 3 साल का लॉक इन लगता है. Very rarely you have like that kind of a weird timing in the middle of a bear market जहाँ पे आपका शायद 3 साल के बाद you don't have some gain, like 1-2% ही सही, right. तो वो आदत एक बार डाल लो. उसके बाद as you start to understand the market more, as you start to understand कि इसका क्या फायदा है, right, and what kind of change or what kind of potential that specific project has, then opportunity cost की बात है, right. In my opinion it is all about like calculating that opportunity cost कि मैंने, if I'm looking at a specific project, I can compare it to stocks or I can compare it to the whole stock market, right. I can say ठीक है यार मेरे को रिस्क लेना है, मैं 30,000 का रिस्क ले सकता हूँ. आई एम फाइन लूजिंग दैट 30K, और आई एम फाइन कि वो 30,000 का आज 5,000 हो जाए, शायद 1.5 साल होल्ड कर लिया और वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो शायद वापस उसका 3 लाख भी हो सकता है. आई डोंट नो, राइट. नोबडी नोज. तो वो रिस्क वाला फैक्टर, एज यू गेट यूज टू दैट रिस्क फैक्टर, एज यू गेट टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टीम्स बिल्डिंग दीज प्रोजेक्ट्स, विच इज समथिंग दैट पीपल मिस. नाम देखा और न्यूज़ देखी और डाल दिया, राइट. Look at the teams. I think that's very important to understand a project. It has been phenomenal. यार ये बंदे ने किया क्या है लाइफ में पहले, the person who's leading that project, the person who's building the tech of that project, right. I always advise कि look at the interviews.
the leadership, जो भी उस प्रोजेक्ट की लीडरशिप है, look at their interviews. And that's also one of the reasons anonymous project से मैं थोड़ा दूर रहने को ही बोलता हूँ और खुद भी रहता हूँ, because that's something I can't understand. So if I'm not understanding it well enough, no point putting money in it, right? क्या ही expect करेगा बंदा जब कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे. So that's been my advice, and that's also my opinion, and I kind of also live and breathe that personally. So, what do we think is the future of blockchain industry? Pretty bright, globally as well as in India. कोई restriction नहीं है. Crypto, blockchain ये thrive करेगा ही. Irrespective of whatever comes, you cannot stop a technology whose time has come. Globally तो सारे लोग adopt कर रहे, improvise कर रहे उस चीज पे. इंडिया में भी ब्लॉकचेन के अराउंड देयर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाइब्स. क्रिप्टो के अराउंड भी वो पॉजिटिव होते जा रही है. सो दैट्स काइंड ऑफ अ प्रीटी नीट डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड. Extremely bullish around what crypto or blockchain would achieve. And if you are considering whether you want to get or be anyway involved into the industry, it's 100% thumbs up. If I was there at your point in time, मतलब मैं अगर college से graduate हो रहा होता तो I would have done it. मतलब I would have definitely done it. Just to kind of give you an example, 2013 is when I graduated, and 2013 में जब मैं graduate कर रहा था, at that point in time e-commerce and like mobile commerce and all of that was sort of moving, and I decided कि यार मैं इस industry में काम करूँगा. So because those choices kind of pretty much define what things happen with you and all. So you have to be sort of clear on that. 2017 is when crypto started happening, and I was like, here, crypto mein, there is kind of a lot of things that could be sort of done. And Prashant, who is my co-founder, who actually kind of came up with that idea of building the exchange, and we decided, Prashant, Omi, together kind of built it, and वही है, मतलब that has kind of worked well for us. We had to face a lot of issues, negativity and problems, but यार तुम इसीलिए ठान कराओ, मतलब इट्स नॉट कि यार फ्लिमजी वे में कुछ डिसाइड कर लिया आज ये करेंगे कल वो करेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बैकफायर. दैट्स व्हाई आई से कि यार अभी चीजें चल जाएगी बिकॉज इट्स अ बुल मार्केट. यू विल काइंड ऑफ थ्रो मनी एट एनीथिंग, इट वुड ग्रो एट डिफरेंट प्रोपोर्शंस, राइट. बेयर मार्केट में वन यू इफ यू डू योर रिसर्च, इफ यू डू इट वेल, दैट्स व्हेन यू काइंड ऑफ मेक रिटर्न, which is precisely why it is very hard to make consistent returns. So Warren Buffett kiya hai, it is very, very hard to do that. That's why very few people sort of have bet him over a period of that sort of tenure. And that's why don't consider yourself too smart if you have kind of made money, and don't consider yourself too dumb if you're kind of losing money. Matlab, these are cycles you'll kind of make and break. It is just that कि एक फ्लो होना चाहिए. प्रोसेस के थ्रू आप कर रहे हो, रैंडमली अगर चीजों करोगे तो यू विल फील लॉस्ट. कि यार जब चीजें वर्क कर रही है तब यू माइट कंसिडर कि इट वाज योर सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन, बट जब चीजें रॉन्ग जाएगी देन यू विल फील लॉस्ट. कि यार व्हाट इज इट, आई एम द सेम पर्सन, आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, बट व्हाई इज इट दैट कि यार मेरा पोर्टफोलियो बस नीचे जाता जा रहा है. Yeah, I think an important fact is bear market में आपका portfolio कितना up जाता है is usually and consistently up जाता है, as you said, like what Warren Buffett has Right. done. The reason it is difficult is returns अगर देखो तो crypto में लोग बोलते हैं Warren Buffett 40% या I think right now he's at about 27-28% CAGR maybe with the amount of funds he has. लोग बोलते हैं 27%, but look at the timeline, right? That's 60 odd years. Monish Pabrai, same kind of timeline. But so that's I think the cryptocurrency asset, or rather cryptocurrency side and the crypto asset wala side. But then there is also from a career perspective a private blockchain wala side bhi hai ek, which not a lot of people know about, क्योंकि वो कभी न्यूज़ में आता नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस 100x नहीं होता है तो मीडिया को क्लिक नहीं मिलते हैं तो वो न्यूज़ में नहीं आता है, right? Right. A lot of companies have private blockchains, so I've tried to push this information out through my content as well time to time. I think if you can shed some light on this, कि क्रिप्टो करेंसी पब्लिकली ट्रेड किए बिना भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स चल रही हैं, एंड दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, दे आर हायरिंग अ लॉट लाइक teams, and they are paying what a cryptocurrency based project would pay as well, right? Right. Right. So that's out there, मतलब
फ्यूचर बनाना है, मतलब करियर, इफ यू काइंड ऑफ लाइक द स्पेस, डेफिनेटली काइंड ऑफ गो ऑल इन, दैट इज डेफिनेट देयर. एंड क्या चीज, लाइक आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर अराउंड टैक्सेस. हाउ वुड द टैक्सेस बी? अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो हाउ आर द टैक्सेस टू बी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पेड? तो इसके अराउंड क्लैरिटी और आएगी. अभी भी आपको टैक्स तो पे करना ही है, मतलब इफ यू आर अर्निंग समथिंग, even if it's not done the right way, you will still have to pay. मतलब आप पोकर खेल के भी पैसा कमाए हो, आपके बैंक अकाउंट में है तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा. That's how a country works. That's how they say कि they'll kind of take money and use it to build roads or infrastructure and all that sort of stuff, right? So it is true, but the difference is कि वो उतना efficiently नहीं होता है. That's where people start questioning कि यार मैं क्यों पे कर रहा हूँ taxes and all of that. यार अभी दिखता है कि रोड सही से नहीं बना है, like electricity जा रही है and all that sort of stuff. But like that's how a country operates. जब taxes के around आप क्या हो उस पर depend करता है. Are you kind of investing it for a longer term? Are you trading on a daily basis? फिर उसको बिजनेस इनकम कैटेगराइज करके या अदर इनकम कैटेगराइज करके आप उसे टैक्स फाइलिंग कर सकते हो. अलग अलग हेडर्स के अलग अलग चीज़ होंगे. अगर माइनर हो तो आपका टैक्स फाइलिंग का फ्लो डिफरेंट होगा, ट्रेडर हो तो अलग होगा, इन्वेस्टर होगा तो अलग होगा. इस वजह से आप कर सकते हो. आई थिंक विल आल्सो शेयर अ लिंक अराउंड दैट, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ फाइल टैक्सेस, दिस इज हाउ यू कैन काइंड ऑफ पुट अक्रॉस प्रॉफिट्स. अगर आपने रियलाइज किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम in a particular financial year, you'll have to calculate the sort of profits that have been made, declare them, okay, this is the amount of profits made, and accordingly, according to your slab, you'll see a percentage or the amount that you'll have to sort of pay. So that's out there. That's around taxes. If you have any comments, Shivam or Neil. No, quickly, I think वो जो link आप share करोगे, I'll also make sure it goes on to my channels as well, because it's a very common question. And usually also I think it won't hurt अगर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करें. It won't hurt to pay a CA and take advice, right? 1000 2000 रुपए आप उनको दो, you take an hour, sit with them, get a proper plan and right, क्योंकि long run में that person might end up saving saving you you a lot more. and a lot of unnecessary tax through legal ways, whatever is to be done. उस हिसाब से तो बहुत important है कि आप proper लोगों को consult करो, right? And I'll again say YouTubers are not your Not proper proper tax management. advice place, right? I think Gaurav, because he comes from that side and that experience, I think still works better. But again, even him, या Right. शिवम को पूछ लिया, मतलब शिवम ने बोला, शिवम क्योंकि शिवम अलग तरह से टैक्स भरेगा, राइट? I also earn as a YouTuber, right? So for me it's going to be different than just maybe अगर आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, right? तो वो सारे एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना. And I think moving on to our final question, that is out there. Has the government proposed to launch its own digital currency in India? Government नहीं, RBI ने propose किया है. RBI is saying e-rupee launch करेंगे. RBI likes their own currency a lot, so they have been saying कि it is very good and would have all the sort of features and everything. So definitely there is work that has happened around that. Basically जो CBDC बोला जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसी का फॉर्म फैक्टर है ई-रूपी नाम से, एंड वो उसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वो चीज़ है. आई थिंक आर देयर एनी क्वेश्चंस इन द चैट? Yeah, let's see. Cool. Yeah, so Indian government, okay. Think blockchain में career roadmap, I think if you just scroll back maybe 5 minute पीछे 5-10 मिनट, you'll find that as well. So more or less I think जो chat में भी questions हैं maximum Almost तो Right. answer सारे है, right? आंसर हो Some गए. BitBNS questions are there. I'll just answer them. Yeah, Are there metaverse questions listed on BitBNS? Yes. You have Sand, you have Engine, you have others that are kind of listed. Why not let Binance work till you are able to complete?
यार राजेश, हम लोग नहीं डिसीजन ले रहे, गवर्नमेंट का डिसीजन है. वी आर जस्ट टेलिंग कि क्या रैशनल है उसके पीछे. Gaurav, will you offer more trading discounts on your platform? Yes. We'll want to kind of ensure that we create a very, very robust sort of trading experience for all the Yeah. users, which is globally good. मतलब globally उसे अच्छा माना जाए वैसे बनाने की कोशिश करेंगे. हम नहीं बनाएगा तो कोई और बना के they'll become the leaders, right? So it's about that. People of course always have choices, right? So if a Paytm didn't kind of jump onto UPI, a PhonePe did, and people shifted to PhonePe, right? So it's not about that. You will have choices. We'll of course put up our fights and all, and we'll kind of ensure that we remain the best along that. But it's going to be pretty competitive. And आपको ऐसा नहीं होगा कि यार ऑप्शंस का भाव हो जाएगा. मतलब one thing that I can kind of bet on is the ingenuity of the engineers that are out there in India and the sort of product talent and everything that is out there. So वैसा कोई issue होगा नहीं, and you will kind of be able to trade all the sort of things that you're doing. And some crypto I have question, I think uses private wallet. So one person has an interesting question is like कि प्राइवेट वॉलेट बैन अगर हो जाएंगे तो इंडियन एक्सचेंजेस भी तो प्राइवेट वॉलेट यूज करते होंगे टू स्टोर देयर फंड्स. हाउ वुड दे ऑपरेट? सो दे विल काइंड KYC private wallet. के लिए स्किप हो जाएगा. मतलब इट्स नॉट दैट, इट्स बेसिकली कि एक्सचेंजेस के लिए अलग सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगे, यूजर्स के लिए अलग होंगे. But we are trying to fight back on the private wallet part. We're not going to kind of like let it go through. We're going to fight back saying कि यार ये enforce करना बहुत difficult है, और it's not where the world is going to head. मतलब user privacy and some of these things are critical. At the same time अगर आपको कोई मतलब कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उस चीजों का, या फिर फंड्स गलत वे से एक्वायर किए गए, तो there should be some way to kind of figure that out. So it's sort of a very tricky sort of a problem, and we'll kind of discuss and fight back on that. Should there be restriction creating your own currency? I don't think so. वहाँ पे कोई restriction होना चाहिए. People can create currency for different sort of things. It how that is introduced, whether that is openly accessible via the trading platforms, those all things would be kind of seen. And yeah, I think we've covered broadly most of it. और कोई questions है तो let us know. Anything that you guys see? कि एक दो questions that I'm just Yeah. looking at. So एक क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन से मार्केट क्यों डंप कर रहा है? यार इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को. लाइक Yeah. जीरो फर्क पड़ता है. ठीक है, कुछ नंबर फर्क नहीं वन. पड़ेगा. क्योंकि यार इंडिया का जो लाइक टोटल होल्डिंग है क्रिप्टो का इस सब $5-6 billion. ठीक है, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $3 trillion. मतलब इट इज नॉट इवन 1% ऑफ दैट. 1% अगर कुछ होता और वो सेल करता तो बात अलग थी. ठीक है, लाइक तो भी इतना नहीं आता. there are certain wins which would have more funds than what total Indian crypto ecosystem holds वैसे sense में. So that Yeah. is one. So it doesn't impact. मतलब Yeah, ये but अगर आपको the लग timing is immaculate. हाँ ये मतलब अभी यही है मार्केट में फट चल रहा है like एंड मार्केट डंप कर रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि अरे तो बट नहीं. So like it's that कि यार ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो पैटर्न ढूंढना शुरू कर देता है. ठीक है, इसी चक्कर में लाइक लॉट ऑफ दिस अंधश्रद्धा एंड ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न फाइंडिंग, राइट? पीपल फाइंड कि यार मैं भगवान के पास नहीं गया इसलिए आज मेरे को पैर पे चोट लगी, whatever it is, right? मतलब या फिर मैं इस बाबा के पास नहीं गया, वो whatever it is. So human nature is inherently pattern finding. अब वो पैटर्न फाइंडिंग काफी केसेस में कोइंसिडेंटल भी हो जाता है. ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स काइंड ऑफ डूइंग दैट. बट इट इंडियन गवर्नमेंट की न्यूज तुम्हारे आईएनआर वाले मार्केट्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है. ठीक है, सो योर यूएसडीटी आईएनआर और बीटीसी आईएनआर, दोज मार्केट्स आर इम्पैक्टेड बिकॉज आपका प्रीमियम चेंज हो जाता है. सो यूएसडीटी जो 80 पे ट्रेड कर रहा है वो 70 पे ट्रेड करेगा, तो बीटीसी आईएनआर का मार्केट डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा. बीटीसी यूएसडीटी या ये सब मार्केट्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. या सो अभी लेट्स से कि जो स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, ठीक है,
मतलब एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम द चैट। तो फॉरेन एक्सचेंजेस में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको, उनसे क्या मतलब थोड़ा कोई एडवाइस है उनके लिए पॉसिबल, क्या राइट, करना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड करता है, दे लाइक वेट फॉर द क्लैरिटी अराउंड बिट। ठीक है, मतलब डोंट टेक एनी डिसीजन बिफोर हैंड। बट इंडियन एक्सचेंजेस पर अगर आपका ज्यादा अकाउंट नहीं है तो अलग अलग एक्सचेंजेस पे अकाउंट बना लीजिए। ट्राई ट्रेडिंग अ बिट देयर एंड देन यू डिसाइड। ठीक है, डोंट गो ऑन टू एनी रिव्यूज, या फिर लोगों का कोई मोटिव हो सकता है कि यार किसी को अपना रेफरल चिपकाना है तो वो बोल देगा कि यार ये एक्सचेंज अच्छा है, ठीक है, और वो एक्सचेंज अच्छा है। डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अकाउंट होना एनीवेज बेनिफिशियल है आपके लिए कि यार कोई टोकन इस आर्बिट्रेज। एक्सचेंज पे नहीं ट्रेड होता है, कहीं कभी किसी का डिपॉजिट बंद है, कभी किसी की इस पे यूपीआई नहीं डिपॉजिट हो रहा है। These are problems that kind of keep happening across exchanges. किसी exchange पे deposit में fee लग रहा है, it can multiple problems could be out there, so you always would have option. So multiple exchange खुद experience करिए, make your opinion. ठीक है, none of the exchanges are perfect, they'll always have flaws and issues and everything. um, you need to kind of also check कि यार वो अगर issue आता है तो वो resolve हो जा रहा है नहीं, ठीक है, और वो क्विकली रिजॉल्व अगर हो रहा है तो देन इट्स फाइन। सो ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, कीप दैट स्पेक्ट्रम ऑफ द थिंग्स रेडी कि यार अगर आपको एसेट्स मूव करने होंगे तो यू विल हैव क्लैरिटी कि यार इस एक्सचेंज पे मूव करना ज्यादा सेंसिबल है। या Right, दैट right. मेक सेंस। आई थिंक आई गेस ऑल सेट है। आप अगर बिटबीएनएस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार जस्ट चेक कर लो। I think I've addressed most of it. बाकी Anything कमेंट कर else, सकते हैं। let me know. बाकी we'll keep working, we'll ensure कि यार कोई information जो भी आती है हम लोग हमारे माध्यम से बताएंगे बिटबीएनएस के थ्रू, ये लोग अपने चैनल से भी बताएंगे, so that you get any critical information that is out there at the earliest. And as an exchange, we can just promise कि यार we'll try and ensure कि we build a world-class platform. We would have lagged at times. You can be very ruthless on that. कान पकड़ो, गाली मारो, जो करना है करो, ठीक है, hold us accountable. We'll never kind of back like be hesitant around that, but वैसा मत कर दो कि यार तो आपका लाइक कोई इशू अगर हो रहा है तो सीधा आप निर्मला सीतारमन को टैग कर दोगे कि मेरा 11 रुपए डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आप किसी को वैसा टैग कर दो, बिकॉज दैट पेंट्स द एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री इन नेगेटिव। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिटबीएनएस बट ओवरऑल अदर एक्सचेंजेस एज वेल कि यार वो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को नेगेटिव में पेंट करता है, बिकॉज दे फील कि यार इतने सारे कंप्लेंट्स की वो इस चीज के। क्रिप्टो इज वन ऑफ द मोस्ट वोकल इंडस्ट्रीज। यहाँ के जो कस्टमर का जो डिलाइट फैक्टर है दैट इज रियली हाई एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई। वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट आल्सो हैज बीन कि यार ग्लोबली चीजें होने लगी, people also got global exchanges का access and all those sort of things. Now those exchanges sort of had certain benefits कि यार उनको fiat वाला कभी deal नहीं करना पड़ा and all those sort of things. But whatever it is, try yourself different exchanges, take a call and then kind of decide. And exchange choose करने में I'll just kind of give certain parameters कि यार सबसे पहले चूज करो कि यार एसेट्स अलग अलग एसेट्स है। ऐसा नहीं कि यार एक्सचेंज पे 5 10 20 85 एसेट्स ट्रेड होते हैं। इफ यू सी वाइडर वैरायटी लेजिट प्रोजेक्ट्स, टॉप मार्केट कैप के प्रोजेक्ट्स अगर हैं ज्यादा किसी एक्सचेंज पे तो दैट इज नंबर वन चॉइस। डिफरेंट टाइप के फीचर्स अवेलेबल है, दैट इज रियली क्रिटिकल कि यार अगर आपको लेंड बोरो करना है या फिर कुछ ट्रेड करना है या फिर इवन डेरिवेटिव ट्रेड करना है, एसआईपी करना है, अगर अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है तो दैट इज हेल्पफुल कि आपको अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। डिपॉजिट विड्रॉ चेक कर लो आईएनआर का, विड्रॉ पे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है, कितना लिमिटेशंस है, इंस्टेंट विड्रॉ है या नहीं, कोई फीस है या नहीं। फीस इज क्रिटिकल कि यार वहां पे आप मनी लूज करोगे नहीं तो हर बार। एंड टोकन्स का डिपॉजिट विड्रॉ है या नहीं, दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वरना you can get stuck in certain platforms. And apart from that, how is the customer service? You'll definitely face some or the other issue. जब भी face करोगे, how is the customer service? Are they responsive? How much time do they take for response and all? And उसकी basis पे आपको आपका opinion बन जाएगा. So try it out and then decide what sort of works best for you. Cool. I think Awesome. we've
kept a lot of people holding on a Friday night. I think most of them are waiting कि यार सिया cheap thrills लगाएंगे अभी. या स्पैम कर रहे हैं मुझे कि आओ लाइव. चला, cool. Yeah. Sounds great. Right. Thanks a lot for tuning in. Thank you, Gaurav. Thanks. Okay. Yeah. Thank you for having Thank us. you, everyone. It was a good Bye. discussion. I hope काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा. It's not always about trading. आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, किसी भी चीज का Correct. फंडामेंटली भी नॉलेज होना चाहिए, एंड वो डिस्कशन से ही आता है. Okay, Right. so I hope you guys learned something. Cool. Sounds good. Thanks. Omi, you can turn off the stream. All right. Thank you.